Okay, so spreading coefficient again you can see. So spreading coefficient of benzene 8.10, spreading coefficient of liquid petroleum on water is minus 13.41. इथाइल ईथर है ना, इथाइल ईथर का स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट वाटर के साथ में होता है 45.44, ओलिक एसिड का होता है 24.21, इथेनॉल का 50 एंड ऑक्टेन 0.22. Now weighting phenomena. Weighting phenomena. Okay. What is weighting? Weighting is nothing but the intimate contact between the solid and liquid. अगर आपके पास में कोई solid particle है, सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड है, अगर वो लिक्विड है ना, तो सॉलिड पार्टिकल के अराउंड नहीं आ रहा है. If liquid is not able to form a layer around the solid, then it is a incomplete weighting. Liquid forms a layer around the solid, then it's a complete weighting. So weighting phenomena is nothing but the intimacy between the liquid and solid particle. Okay, intimacy between the liquid and solid particle, right? Talc and charcoal. Talc and charcoal when powdered and added to water, they don't get weighted properly. चारकोल का पाउडर जो है, टाल्क का पाउडर जो है, पूरा वेट नहीं होता है. सो वाटर विल नॉट completely weight the charcoal and talc powder. Okay, though they have higher densities than water, they will float on the water, है ना. चारकोल का पाउडर आप वाटर में डालो तो वो वाटर में फ्लोट होगा, है ना. टाल्क का पाउडर वाटर में डालो फ्लोट होगा. दो टाल्क एंड चारकोल हैज अ मोर डेंसिटी देन वाटर, डेंसिटी उसका ज्यादा है वाटर से, वो आइडियली वो फ्लोट नहीं होना चाहिए, वो सिंक होना चाहिए. यहाँ पे वो फ्लोट हो रहा है, क्यों? बिकॉज वाटर इज नॉट एबल टू वेट देम कम्प्लीटली. अगर उसका प्रॉपरली वेटिंग होता है तो वो ऑब्वियसली सिंक हो जाएगा. Wetting is adsorption process where there is an intimate contact of solid with liquid phase. It is important for a solid in a liquid. Wetting is very important for suspension, emulsion. Right? Wetting is important during granulation, film coating, dissolution of tablet and capsule. Now surfactant, what they do? Surfactant increases the wetting. Surfactant increases the wetting of powder. How they will increase the wetting of powder? First, by decreasing the interfacial tension. पहले तो interfacial tension कम हुए. Then lowering of contact angle between the solid and liquid. And third, displacing the air and permit the intimate contact. Now what is contact angle? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार. Contact angle is nothing but the angle between liquid droplet and surface over its spreads. And the angle between liquid droplet and surface on which it is spreading, है ना. तो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था देखो, है ना. नाउ कॉन्टैक्ट एंगल में भी फ्रॉम 0 to 180. कॉन्टैक्ट एंगल किसी लिक्विड का कॉन्टैक्ट एंगल 0 हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है. कॉन्टैक्ट एंगल इट में भी 0 from 0 to 180. Now it is indicator of efficiency of wetting agent. It is indicator of efficiency of wetting agent. कॉन्टैक्ट एंगल 0 है मतलब उसका मतलब आता है ना, कंप्लीट वेटिंग. कॉन्टैक्ट एंगल 0 से ज्यादा है ना, और 180 है तो मतलब इनकम्प्लीट वेटिंग, लाइक दिस. सो कॉन्टैक्ट एंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ए वाटर ड्रॉप ऑन अ ग्लास सरफेस, ए वाटर ड्रॉप ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट एंगल? इट इज 0. कॉन्टैक्ट एंगल इज जनरेटेड बाय थीटा. तो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा होता है. वाटर का ड्रॉप अगर आप ग्लास सरफेस के ऊपर नहीं है डालेंगे तो वहां पे कॉन्टैक्ट एंगल 0 है ना. कॉन्टैक्ट एंगल 0. Contact angle is more than 90 for fatty acid drop on a clean glass surface. A drop of water on paraffin coated surface. अगर paraffin coated surface है आपका, उसके ऊपर water drop डाल दिया तो contact angle ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा, more than 90. A drop fatty acid drop on a glass surface. अगर oil का drop डाल दिया आपने, उसका contact angle 90 से ज़्यादा होगा. अगर water का drop glass surface के ऊपर है तो उसका contact angle होगा 0. It is a contact theta is equal to 109 for a drop of water on a Teflon. Whether it is a poor wetting, whether it is a complete wetting, whether it is a partial wetting, or whether it is a non-wetting, that is also given by this contact angle. Contact angle के ही ऊपर wetting होता है. Wetting करें. अगर if there is a poorly wetted solid, so you cannot form that solid in suspension.
अगर आपको सस्पेंशन बनाना है, अगर वो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल if you want to prepare a suspension of paracetamol, and paracetamol is a complete not, it is an incomplete wetting, so you cannot establish the dosage uniformity. So for that you are adding ethanol. Okay, so ethanol will increase the wetting of your acetaminophen paracetamol. So remember, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, efficiency of wetting agent. So it is, there is one test known as the Dreyer's test. दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है इसका. So Dreyer test will check the efficiency of wetting agent. I think GPAT 2021 में भी आ चुका है Dreyer's test. If contact angle is 0, if contact angle is 180 degree, कोई लिक्विड का contact angle सॉलिड में if is a 180, so it is a non-wettable. इसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है. If theta is equal to 180, it is a non-wettable. If theta is equal, you know, theta is, if contact angle is less than 180 but more than 90, if contact angle is less than 180 but more than 90, it is a poor wetting. Now if contact angle is 0, if contact angle is, you know, more than 0 but less than 90, if contact angle is more than 0 but less than 90, so it indicates the partial or incomplete wetting. And if contact angle is 0, then it indicate the complete wetting. ये चार जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बोल रहा है. So if contact angle between solid and liquid is 180, that means the solid is non-wettable. If contact angle theta is less than 180 but more than 90, यहाँ पे सिंबल गलत हो चुका है. If contact angle is less than, okay, if contact angle is less than 180 but more than 90, it is a poor wetting. If contact angle is more than 0 but less than 90, it is a partial or incomplete wetting. And if contact angle between solid and liquid is 0, that means complete wetting. तो इसके ऊपर भी दो तीन बार क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने जैसे बोला है. आर यू गेटिंग माय वॉइस? ओके, तो स्प्रेडिंग देखो, स्प्रेडिंग. सो इफ स्प्रेडिंग के लिए वेटिंग का एंगल जो होता है, जैसे स्प्रेडिंग एंगल भी होता है, तो स्प्रेडिंग एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा. सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, देयर इज अ स्प्रेडिंग. अल्फा इज लेस देन 90, गुड वेटिंग. इफ इज इक्वल टू 90, incomplete wetting. If it is more than 90, incomplete wetting. And if it is a more than 180, non wetting. यहाँ पे एग्जांपल दिए है इसके, मतलब you can see few examples of drug with their contact angles. Few examples of drug with their contact angle. So indomethacin contact angle is 90. Chlorphenicol palmitate alpha polymorph contact angle is 120. वो कितना कम वेटिंग होता है इसमें. Dolbitamide 72, ampicillin trihydrate 21, nitrofurantoin 69, lactose का वेटिंग एंगल 30, phenylbutazone 109. So that is a weighting angle of few drugs. Now next point is nothing but the critical surface tension. Critical surface tension. So critical surface tension is nothing but the relationship between advancing contact angle, there is a cos theta, and surface tension of wetting liquid. A linear relationship is obtained between cos theta and surface tension. Surface tension at cos theta is equal to 1 is known as a critical surface tension solid, and it is very important characteristic for solid related composition. It is useful in the tableting, okay, in tablet coating, granulation, lubrication addition. Lubricant addition like magnesium stearate will provide you surface rich with the methyl and ethyl groups, which decreases the critical surface tension. Compound like cellulose and starch result in the surface tension, result in the reach in the O and OH group, which cause increase in the critical surface tension. तो critical surface tension क्या होता है? अपने surface tension को देखा है. Critical surface tension is nothing but the relationship between advancing, है ना, तो वेटिंग है ना. देखो यहाँ पे सॉलिड का मिक्सिंग जब होता है, सो देयर इज आल्सो इंटीमेशन, देयर इज आल्सो इंटीमेट कांटेक्ट ऑफ सॉलिड विद अनदर सॉलिड, देन ओनली मिक्सिंग इज देयर. सो इन दैट आल्सो देयर इज अ कांटेक्ट एंगल, राइट.
So critical surface tension is nothing but the relationship between advancing contact angle. There is a cos theta. Advancing मतलब contact angle between solid and solid. So advancing contact angle cos theta is and surface tension of a wetting liquid. A linear relationship is obtained if you plot this, advancing contact angle cos theta and surface tension. So a linear relationship is obtained that is between cos theta and surface tension. A surface tension at a cos theta is equal to 1 is nothing but the critical tension of solid. Critical tension of solid, and it is very important characteristic for solid relation related composition. It is useful in the tablet coating and granulation. If lubricant addition, there is addition of lubricant like sodium stearate, addition of lubricant like magnesium stearate. Magnesium stearate will provide you a groups rich in the methyl and ethyl. देखो कौन magnesium stearate. So it will decrease the contact angle. Magnesium stearate will provide a surface rich in the CH3, CH2, which will decrease the critical surface tension. Compounds like cellulose starch, they will result in the they will donate the O and OH groups and will increase the critical surface tension. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए वो पॉइंट ऐड किया है. Now detergency is what? Detergency इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं. Detergency. It is a property of surfactant in a solution to remove the dirt from appliances or comb. Okay? मतलब आपके अगर शर्ट में कोई धब्बा लग जाता है, कुछ स्टेन लग जाता है, तो आप डिटर्जेंट यूज करते हो. What that detergent does? So there is a complex mechanism in involving the removal of that. So initially what it will do, initial wetting of dirt. तो डिटर्जेंट क्या करेगा, इनिशियली डर्ट का जो पार्टिकल है उसको वेट करेगा. वेट initial wetting of dirt from the surface, then it will solubilize the dirt. The detergent initially will try to weight the dirt with the liquid, then it will solubilize the dirt and removing the insoluble dirt as a deploculated particle. Deploculated particle या फिर क्या कर सकता है, suspending the particle in a detergent solution, removing the oil soluble material and convert that oil soluble material into emulsion. That is the role of detergent. फिर क्या कर सकता है, converting the dirt into foam so as it can be washed easily. So detergency, again it is a property of surfactant in a solution to remove the dirt from appliances. HLB requirement for detergency, GPAT में आया है क्वेश्चन. HLB requirement for detergency. What is the HLB value for detergents? So HLB value for detergency is nothing but the 13 to 16. Just a minute. Study of electrical properties at the interface as an application in the solubilization of colloidal dispersion, preparation of flocculated suspensions, stabilization of emulsions. Now study of electrical properties of interface. तो इंटरफेस जब होता है दो लिक्विड के बीच में, तो वहाँ पे क्या क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, कौन से कैटायंस होते हैं, कौन से एनायन होते हैं, क्या फॉर्म होता है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. सो दैट हैज एप्लीकेशन इन द solubilization of colloidal dispersion, preparation of flocculated suspension, stabilization of emulsion. So that is the electrical properties of interface. Right? Now a solid dispersed in a liquid. अगर आपने solid को disperse किया liquid में, large solid liquid interface is obtained with, okay, now it may become a charged if you disperse a solid particle in the liquid. Solid particle को liquid में disperse किया, so there is an interface between solid and liquid. Now that interface may become a charge. वहाँ पे वो interface के ऊपर charge भी आ सकता है. कैसे आ सकता है भाई? So the interface will become charged due to electrolytes ion in solution में जो electrolyte ions है, electrolyte ions in the solution may get adsorbed at a solid surface in absence of ion. मतलब electrolyte का ion जो है वो इंटरफेस के ऊपर या सॉलिड के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो सकते हैं. नाउ इन अब्सेंस ऑफ आयन, अगर आयंस नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ आयन, वाटर जो है, अगर आयंस नहीं है तो वाटर गेट डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन. तो अगर आयंस नहीं है तो वाटर का ही डिसोसिएशन होके हाइड्रोनियम आयन बनता है और OH आयन बनता है एंड इट गेट एडसॉर्ब ऑन अ सॉलिड सरफेस.
Adsorption of OH ion is more common because they are the symmetric in nature. Mostly ये OH ion adsorb होते हैं, right? तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एट अ इंटरफेस है ना, इंटरफेस के ऊपर क्या क्या हो सकता है, तो इंटरफेस के ऊपर क्या हो सकता है भाई, when a solid is dispersed into a liquid there is a huge solid liquid interface is there and now this interface may become charged. यहाँ पे चार्ज भी आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है अगर सॉल्यूशन में, so they may get adsorbed on the solid surface. अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है मतलब in absence of ion water will be dissociated and it will get adsorbed. So adsorption of OH ion is common because it is symmetric in nature. Now groups like COO present on the surface of particle may get dissociated and will give you a charge, like COH, NH2 groups on a protein get ionized. Due to difference in the dielectric constant between particle and dispersion medium, responsible for the origin of charge through less common source. तो ग्रुप्स जैसे होते हैं COH ग्रुप है present on the surface particle may get dissociated and will give you charge. जैसे CONH ग्रुप होता है प्रोटीन में, NH2 ग्रुप होता है वो डिसोसिएट होके प्रोटीन को आयोनाइज बना सकता है. Due to difference in the electric constant between these particles dispersion medium they are responsible for the origin of charge through least common source. मतलब इसकी वजह से चार्ज आता है इन इंटरफेस को. Now electrical double layer formation. इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कुछ एनायंस प्लस कैटायंस. सो कैटायंस एट द सॉलिड इंटरफेस, कैटायंस एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस गेट्स एडसॉर्ब ऑन अ सॉलिड एंड गिव्स पॉजिटिव चार्ज, है ना. तो पहले तो क्या करेंगे, कैटायन जो है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस जो है कैटायन वहाँ पे एडसॉर्ब होके पॉजिटिव चार्ज देगा, है ना. पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस, दे आर नोन एज अ पोटेंशियल डिटरमाइनिंग आयंस. बाद में फॉर्मेशन ऑफ टाइटली बाउंड लेयर. After the adsorption, okay, after the adsorption is complete, है ना, few cations, है ना, few cations, पहले तो cations adsorb होंगे, बाद में adsorption होने के बाद cations क्या करेंगे, they will try to attract the anions. So few cations will attract the anions and repel the approaching cations, है ना. anions को attract करेंगे, जो cations approach हो रहा है उसको repel करेंगे. This leads to equal distribution of ions and at equilibrium state some excess of anions are present but they are very less and net charge is nothing but the positive charge at equilibrium. And anions known as a counter ions or genin ions. When particle moves in a liquid the tightly bound layer will also move and boundary of this layer is termed as a shear plane. थर्ड लेयर आता है डिफ्यूज्ड लेयर, है ना. क्या होता है कि जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है एट दैट इंटरफेस समटाइम्स दैट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस में बी चार्ज्ड. चार्ज क्यों होता है, बिकॉज द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो, अगर नहीं है इलेक्ट्रोलाइट, इफ देयर इज नो आयंस so water will be dissociated into hydronium ion and hydroxyl ion and OH ions they get adsorbed. So formation of layer, electrical double layer. So cations initially at a solid liquid interface they will get adsorbed, okay, and gives positive charge to the solid liquid interface. तो उसको बोलते हैं अपन potential determining ions. Second होता है tightly bound layer. So after the adsorption of cations, so they will few cations will attract the anions and repel the approaching cations. तो anions को attract करेंगे, cations को repel करेंगे, ठीक है. मतलब पहले cations उसके बाद में anions उसके बाद में फिर से cation आएगा, ठीक है. So this leads to equal distribution of ions at a equilibrium. At a equilibrium some excess of anions are present but they are very less and net charge is nothing but the positive charge. So anions are called as counter ions or genin ions. When particle moves in a liquid the tightly bound layer is also moves. Boundary of this layer is termed as a shear plane. Now third is nothing but the diffuse second layer. Excessive negative ions present in this layer beyond the boundary of this
इन बल्क ऑफ लिक्विड, मतलब इसके बाद में क्या है कि नेगेटिव आयंस होते हैं बल्क ऑफ लिक्विड में and distributed uniformly, and the system is electrically neutral. There is a diffuse second layer. Therefore, electrical double layer consists of a tightly bound layer and diffuse second layer. You can see over here, say it is interface, liquid solid interface. Right? क्या होता है? This is known as a solid liquid interface. Solid है. Some cations are present in the solution. They get adsorbed at a surface of solid. Few cations will attract anions. Anions attract करेंगे. That is a tightly bound layer. है ना? Anions attract करेंगे उसके बाद में फिर से cations. So A and B. This is a tightly bound layer. Now in the diffuse second layer, so there are few cations. So in the tightly bound layer, the charge is positive. In the diffuse second layer, there is a no net charge. Still charge is. Third is known as a bulk of liquid. In this, negative ions are there. And a solid liquid interface, distribution of ions, positive charge, electrically neutral. So in the tightly bound layer, there is a positive charge. In the diffuse second layer, there is a B and C. That is a again positive charge, and it is a electrically neutral layer. Okay. Now this is known as a shear line or shear line. This is electrical double layer formation. Now, nurst potential. What do you mean by nurst potential? It is also known as a electrothermodynamic potential, and difference between potential of actual surface and electronegative region. तो actual surface जो है और electro neutral region जो है उसमें जो difference है potential में उसको बोलेंगे nurst potential. Question आता है इसका बना. What is nurst potential? What is the zeta potential? Nurst potential is also known as electrothermodynamic potential, and it is nothing but the difference in the potential between actual surface and electronic neutral region of the solution. Nurst potential. बाद में आता है zeta potential. So it is also known as electrokinetic potential. Nurst potential को बोलते हैं thermodynamic potential, and zeta potential को बोलते हैं electrokinetic potential. So it is a difference in the potential between surface of tightly bound layer and electroneutral region. है ना? नर्स्ट पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है कि नर्स्ट पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल सरफेस और इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन जो है सॉल्यूशन का उसमें क्या डिफरेंस पोटेंशियल दिखाता है. जीटा पोटेंशियल क्या दिखाता है कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन टाइटली बाउंड लेयर एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन. है ना? सो जीटा पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज अ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग. जीटा पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज अ वर्क रिक्वायर्ड टू bring unit charge from infinity to the surface of the particle. Now zeta potential governs the degree of repulsion. Zeta potential governs the degree of repulsion between adjacent ion having similar charge. Hence, used to predict the particle-particle interaction. Optimum zeta potential is desirable in case of maximum stability. सस्पेंशन का स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता जब ऑप्टिमम जीटा पोटेंशियल रहता है. If zeta potential decreases below the optimum potential, then the attractive forces will exceed and repulsive forces and result in the aggregation of particle. है ना? जब जीटा पोटेंशियल अगर उसका कम हो जाएगा इमल्शन का तो जो attractive forces होता है between the globules वो बढ़ जाएंगे and repulsive forces कम हो जाएंगे. और attractive forces बढ़ने के कारण क्या होगा? There is an aggregation of particles. There is an aggregation of particles means there is a creaming, okay, creaming or coalescence. This zeta potential is useful in the predicting the stability of emulsion. Stability of emulsion. This is observed in case of colloids. Zeta potential decreases more rapidly upon addition of electrolyte in a higher concentration or valency of counter ion is also higher. तो zeta potential nurse potential क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So zeta potential is nothing but the difference in the potential between the tightly bound layer and electronegative layer of your electronegative layer of your bulk of the solution. And nurse potential क्या होता है? This is the difference between potential of actual surface and electroneutral region of the solution. याद रखना है इसका क्वेश्चन आता है. So this will end your surface tension interfacial phenomenon chapter from GPAT point of view.